हे गाइस, आई एम पूर्वा और आज हम बहुत ही इजी और इफेक्टिव वर्कआउट परफॉर्म करेंगे जो कि है आपके अपर बॉडी के लिए। ये वर्कआउट कोई भी परफॉर्म कर सकता है, बिगिनर्स हो या एडवांस लेवल हो। इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के मिडल में आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप फॉर यू, सो वॉच फुल वीडियो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। Also subscribe and share as much as possible. So let's get into the video. हम वर्कआउट 5 सेशंस में डिवाइड करेंगे और हर सेशन के बीच में 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। हम बैक वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्कआउट हम करेंगे बैक एक्सटेंशन। इसमें आपको बैक रेज्ड रखनी है और एल्बोज ग्राउंड को पैरेलल रखने हैं। ध्यान रखिए कि आपका बैक का और एल्बोज का एंगल मेंटेन रहे। नेक्स्ट वर्कआउट है बैक फ्लाई। इसमें आपको बैक रेज्ड रखनी है और आपके आर्म्स सीलिंग के तरफ पुश करने हैं। ये वर्कआउट आपके अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। हमारे फर्स्ट सेशन का लास्ट वर्कआउट है सील पुशअप। ये आपके अपर और लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। साथ ही आपके आर्म स्ट्रेंथन करने में भी बहुत हेल्प करता है। Come on, last few seconds and then we have 30 seconds of rest. It's not a game, it's a rich thing. सेकेंड सेशन का फर्स्ट वर्कआउट है ट्राइसेप डिप्स। इसमें आपको दोनों पाम के बीच में डायमंड शेप बनाना है और पुशअप करना है। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। ध्यान रखिए आपको एल्बोस बहुत ही बाहर नहीं पॉइंट करने हैं, बल्कि थोड़ा अंदर टक करना है। सेकेंड वर्कआउट है ट्राइसेप डिप्स। Come on, we have to burn those arms. Get started. नेक्स्ट वर्कआउट है बाइसेप कर्ल। इसके लिए आप बॉटल या ब्रिक कुछ भी यूज कर सकते हो। Come on, squeeze your arms. Squeeze those biceps. Yes.
again. It's a rich thing. थर्ड सेशन का फर्स्ट वर्कआउट है स्कूप अप्स। इसमें आपको आर्म्स ऊपर लेके जाते वक्त स्क्वीज करना है और धीरे से नीचे आना है। अगेन गो अप, स्लोली गो अप and then come down slowly and squeeze those muscles. नेक्स्ट इज पुशअप होल्ड। आपको मिडिल रेंज में आके बस होल्ड करना है। दिस लुक्स इजी पर ये बहुत ही डेडली वर्कआउट है आपके चेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम नी पुशअप्स करेंगे। आप चाहो तो आप टोज पे भी ये पुशअप्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई एम श्योर इतने 2 चेस्ट के इंटेंस वर्कआउट करने के बाद ये पुशअप्स भी आपको डिफिकल्ट जाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। कम ऑन, लेट्स डू इट। Few more seconds and we have 30 seconds of rest. Yay! It's not a game. It's a rich thing. फोर्थ सेशन में हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद आर्नोल्ड्स। इसमें आपको सिंपली आपका शोल्डर रोटेट करके आपके आर्म को ऊपर पुश करना है और वापस से पोजीशन में आके नेक्स्ट आर्म को पुश करना है। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको आपकी बॉडी और आर्म में 90 डिग्रीज का एंगल मेंटेन रखना है और आपके शोल्डर को पीछे पुश करना है। ये वर्कआउट दिखने में तो बहुत सिंपल है, पर इतना सब वर्कआउट फॉलो करने के बाद आई एम श्योर दिस वर्कआउट इज गोइंग टू किल यू। It's not a game. It's a rich thing.
कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लास्ट सेशन में पहुंच गए हैं और हमें गिव अप नहीं करना है, करते रहना है बस कुछ और सेकेंड्स. Inchworm, you guys, intense and easy. Come on, let's do it. Last second workout है leg raises. Squeeze your abs. Come on. Last 30 seconds. Keep going. You will thank yourself. It's not a game, it's a rich thing. So now is the time for bonus tip. आज मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आप हर रोज़ कंज्यूम करते हो और आपको पता नहीं है कि ये आपके लिए कितना अनहेल्दी है या कितना हार्मफुल है, और वो है शुगर. आप हर रोज़ बहुत सारा शुगर कंज्यूम कर जाते हो अनकॉन्शियसली. चाय में हो गया, जूस में हो गया, या और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में. शुगर में बहुत सारा केमिकल होता है और शुगर एक बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट है. तो ये जितना हो सके आपको उतना अवॉइड करना चाहिए. शुगर के बदले आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, हनी यूज़ कर सकते हो, या स्टीविया भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि मैं शुगर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर हेल्पफुल था तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर हफ्ते नए वीडियो के साथ आती हूँ. ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so you don't miss a video from me. Thank you.